Welcome to Midsai Odia. I hope am I audible properly to everyone. भय समस्तଙ୍କୁ ଆସୁଛି ନା କିଛି problem ହଉଛି? Am I audible? I think you are getting noise, right? Wait. ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର. Let me do something. I think it is now okay. I think it is now okay. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ. ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମେଡ୍ସାଇ ଓଡ଼ିଆ. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ସେସନକୁ ସ୍ୱାଗତ. ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍. ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ଭଲ କଥା, ଯିଏ ନ ଜାଣିଥିବ ବି ଜାଣିଥାଅ. ଆଇ ଏମ୍ ୟୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍. ତ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା ଆମର ଟେଷ୍ଟରେ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସ୍ ହେଇସାରିଛି, ରାଇଟ୍? ତ ଆମର ଟେଷ୍ଟରେ ଯାହା ଯାହା क्वेश्चन डिस्कस ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା. ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ଟେଷ୍ଟ କେତେଦୂର ଠିକ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି. ତ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଜଏନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ. ଆଉ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅଲରେଡି ମେଡ୍ସାଇ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ଲାसेस ଚାଲିଛି. ଏକ୍ସାମ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ହେଉଛି. ୱିକଲି ଟେଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଟେଷ୍ଟ ବୋଥ୍ ଫର୍ 11th and 12th କ୍ଲାସ कवर होची. सो दैट टू आमे आउरी भी बहुत किछि जिंस रहउछु लाइक मेंटरशिप, वन टू वन स्टूडेंट्स गाइडेंस. तो जो माने भी इंटरेस्टेड काइंडली जॉइन एंड डोंट वेट फॉर अदर्स. So first question, without wasting our time, let's go for the first question. प्रथम क्वेश्चन हमर अछि, from which experiment electrons were from which experiment electrons were discovered? Electron को experiment रो discover ହେଇଥିଲା. Obviously you know that this is cathode ray experiment. कारण cathode ray experiment रो electron को discover कराइଥିଲା. Next, for a d electron the orbital angular momentum is this. d electron ପାଇଁ orbital angular momentum रो value केते होची? for a d electron माने आमे जदि कहिबा SPDF. ठीक अछि. And orbital angular momentum is related to azimuthal quantum number. Right? मुक्ति प्रसाद देखिवा ठीक कहिछन कि भूल. या पई L रो वैल्यू 0, P पई 1, D पई 2, F पई 3. अब यार फार्मूला कोन ना L into root over of L into L plus 1 multiplied by H cross by H by 2 pi or H cross. So हम जब देखिवा it is your L into L plus 1. L is equal to how much? 2 multiplied by 2 plus 1, that is 2 multiplied by 3. So this is 6h cross. So 6h cross root 6h cross, that is option number A. बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पिला, बहुत पिला माने ठीक उत्तर दैछंदी. Next, which of the following sets represent a collection of isoelectric species? एमानक भितर isoelectric को गुडाको.
आइसोइलेक्ट्रिक मु कहि रखिया को चाहे जे जो मानक पाखरे कोन थिबो ना इलेक्ट्रॉन समान थिबो। सो बेरियम 2 प्लस स्ट्रोंशियम 2 प्लस जदि हम देखिबा गोटिए ग्रुप रो कैल्शियम भी गोटिए ग्रुप रो तेणु गोटिए ग्रुप रो थिबारो एमानकर इलेक्ट्रॉन केबे भी हेले समान नुह। सिमिलरली पोटासियम कैल्शियम स्कैंडियम क्लोरीन देखिबा पोटासियम रो इलेक्ट्रॉन पोटासियम रे 19 टा 19 रे गोटे गले इलेक्ट्रॉन गले 18 टा कैल्शियम रे जदि देखिबा कैल्शियम रो इलेक्ट्रॉन संख्या 20 20 रो 2 टा गले 18 स्कैंडियम रो 21 टा 21 रो 3 टा गले 18 पुनी क्लोरीन रो 17 टा 17 रे गोटे मिसले 18 सो एई भलिया वे रे जदि देखिबा ऑप्शन 2 सठिक उत्तर होची। आ जदि हम चेक करबा सेम बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम अछि ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 सेम रह जाईची आ स्ट्रोंशियम कैल्शियम भी रहिची सॉरी स्ट्रोंशियम पोटासियम आ स्कैंडियम अछि जो माने कि अलगा अलगा ग्रुप रो प्लस गोटे सेम पीरियड रो नुह तेणु एटा ऑप्शन 2 ही आंसर हबो। हु डिस्कवर्ड न्यूटन बहुत सुंदर आंसर जेम्स चार्विक। जेम्स चार्विक होची James Chadwick discovered Newton, right? Now, how many electrons are permissible for M cell? M cell ପାଇଁ କେତେଟା electron permissible? ପିଲାମାନେ, if you want to reveal someone special is here. Do you want to see him? See. ବସି ଯାଅ ଏଇରେ ବସି କିଏ can you identify who is this? ପିଲାମାନେ, can you identify who is this? କିଏ କହିପାରିବ ଇଏ କିଏ? ओके बहुत कम पिला आइडेंटिफाई कर पाले। सार किछि कहबो सार किछि ये करिवे सार को वॉइस आई थिंक सुनि करिवे। जय जगन्नाथ पिला माने आई थिंक गुड इवनिंग यूट्यूब चैनल ना ये यूट्यूब ले ये बाप रे सुसी नृसिंह सार आछंती। गुड इवनिंग पिला माने गुड इवनिंग भलो अछि तमन सब केमिति अछ पढाबडी केमिति चलछि? बहुत बढ़िया अछि नर्सिंग सार लिख देले सार तो नर्सिंग पढुचनी ताले नर्सिंग सार लिख देले। ओके ठीक है लेट्स कंटिन्यू। या माने नृसिंह सार रागी नुहंती। ओके पिला के कमेंट कले नृसिंह सार रागी नुहंती। मुक्ति प्रसाद साई कहउचंदी या माने नृसिंह सार रागी नुहंती। सौम्य प्रियंका पचारचंदी सार आपण केमिति आसिले? नृसिंह सार को पचार सार कमेंट रे कहबे सार केमिति आसिले। सार जस्ट एबे आसिकी पहुंचले। सार भुवनेश्वर रुहंती ना सार पळे आसिले। बहुत पिला भुवनेश्वर रे रहउछ भुवनेश्वर रे नृसिंह सार को मिसिया कथा।
ओके नृसिंह सार आसते गणेश महोत्सव देखा सार आसचंदी जस्ट रुद्रनारायण सार आसचंदी मेसेज करन देखले लागिला सार पूरा रागी हिथिबे अनिमेष दास कहउचंदी सार ग्रुप रे जो टाइप रो मेसेज करूचंती देखिले लागिला सार पूरा रागी हिथिबे सौम्य प्रियंका सार को सौम्य प्रियंका कहउचंदी सार को मिठा दियंतु सार नरसिंह सार आसिले ठीक अछि सौम्य प्रियंका टिके वेट कर मोर क्लास सरी जाऊ तापरे देखि करियो हौ नरसिंह सार को बहुत जने देखिलो रिवील करि सारलो ओके ठीक अछि नेक्स्ट हम जिबा बहुत कम टाइम रे ई क्वेश्चन सब कवर करिवा देखिबा जेमति हमें सबुडा क्वेश्चन को कवर करि परिबा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर परमिसिबल फॉर m इलेक्ट्रॉन KLM सो m कथा जदि हम देखिबा 2n स्क्वायर फार्मूला पढ़ले कोन हबो 2 into 3 रो स्क्वायर सो इट इज 18 राइट सो इट इज 18 सो हमरो एटा केते आसीबो दैट 2 into 3 रो स्क्वायर दैट इज 18 सौम्य प्रियंका मीटअप रे सार को देखिछंती सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ये गला हमर एमसीक्यू सेक्शन रो क्वेश्चंस तापर हम जिबा जे हमर नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट रे मैक्सिमम माने तुमको दुई तीनटा पॉइंट एक्सप्लेन करिया पड़िबो कोन कोन पॉइंट एक्सप्लेन करिया पड़िबो जदि हम देखिबा पॉइंट्स होची फर्स्ट पॉइंट दुई रो दैट when photons emitted when photons are emitted when photons are emitted from a source ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ source ରୁ photon emit ହବାକୁ ଲାଗିଲା there is no time lag there is no time lag between the elimination of electron as well as your photon बाजिबा ଆଉ electron remove हवा भितर time lag नाही ओके सो ए पॉइंट लिखिया अपेक्षा मेन पॉइंट होची व्हेन फोटॉन्स आर कारण एटा 2 मार्किया क्वेश्चन तमे 3 रु 4 पॉइंट 3 रु 4टा पॉइंट लिखिथि बोली आसाव विषय व्हेन फोटॉन्स आर emitted from a source electrons get ejected without any time lag so कौनसी टाइम लैग न मोर नेटवर्क इशू होथिला ठीक अछि आई थिंक मोर सिस्टम रो प्रॉब्लम होछि सो फोटोन जेतेबेले वॉइस प्रॉब्लम होछि यू आर राइट रुद्रनारायण सो फोटोन जेतेबेले रिमूव होथिला जेतेबेले संगे संगे विदाउट एनी टाइम लैग एडी तुमे टाइम लैग पाउथिला किंतु सेठी कोनस प्रकार लैगिंग हो नथिला ओके देयर वाज नो टाइम लैग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन संगे संगे तत्क्षणात इलेक्ट्रॉन रिमूव होथिला नेक्स्ट पॉइंट वी विल गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट हमर रहितला कोन नेक्स्ट पॉइंट थिला जे जेतेबेले इलेक्ट्रॉन आसीथिला जेतेबेले इलेक्ट्रॉन बाहरिया को जाउची सेतेबेले कोन होतला ना फोटोन रो जो एनर्जी दुईटा पार्ट रे हमर रिजॉल्व हो जाइतला सो यू कैन से दैट द energy of incident photon
energy of sorry voice echo ହଉଛି। ଏବେ ଠିକ ଠାକ ଆସୁଛି right now are you getting is everything okay? So ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏଣ୍ଟର କରୁ ସରି ଫୋଟନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟର କରୁଛି ତା ପାଖରେ ଏନର୍ଜି ଥାଉଛି ଠିକ ଅଛି ସେଇ ଏନର୍ଜିଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ରିଜଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି so we can say that the energy of incident photon energy of incident photon is resolved in two parts that is war function and kinetic energy. So work function or kinetic energy re resolve ହେଇଯାଉଛି. So we can say that h nu is equal to h nu naught that is work function plus kinetic energy. So এই equation টা ଲେଖିବା ବହୁତ important. So more the frequency or energy, more the frequency or energy, so more the frequency or energy of incident photon, more the frequency or energy of incident photon, more will be kinetic energy. So kinetic energy more hobo. So now is it okay?
सो आम देखिले जे कौन जिते तुम फोटो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करुच्ची फोटो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कला परे किसी टाइम लैग रहुनी तापरे कौन रोची ना टाइम लैग रहुनी नेक्स्ट पॉइंट होची जेतोले तुमरो इंसिडेंट फोटोन पडुची तार एनर्जी टा दुई भाग रे रिजॉल्व हो जाउची दैट इज h nu naught plus kinetic energy h nu naught is the work function plus kinetic energy so जेते तुमरो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन जेते अधिक हबो काइनेटिक एनर्जी सेते अधिक हबो आउ गोटे पॉइंट तुमे लिखि दे परिबो कोन लिखि दे परिबो ना आउ गोटे पॉइंट रहितला जेते तुमरो नंबर जेते रहिबो अधिका कोन नंबर ऑफ फोटॉन्स जेते अधिका हबो सेते तुमरो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अधिका हबो सो मोर द इंटेंसिटी ए पॉइंट भी लिखिबा को पड़िबो सो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट लिखिबा निया दरकार मोर द इंटेंसिटी more is the number of photons per unit area so jete intensity adhika habo number of photons per unit area sete adhika habo hence more is the number of photons ba photoelectrons ejected so jete intensity adhika habo number of photons per unit area sete adhika habo and number of photoelectron eject haba sete adhika he jibo ठीक अछि अच्छा मु किछि न कहि कि लिखि दिए केवल कहि जाए आई थिंक सबुडा तो तुम्हारा कौन रही सबुडा को जस्ट theoretical question रही so let me discuss the questions next question रही जे discuss the properties of electron and proton electron और proton रो property हमको discuss करया को कहै छी question रही so let me discuss the question next question रही जे discuss the properties of electron and proton so electron रो properties जो देखिबा electron रो property तारो mass number तारो electron रो property हमरो तारो mass और charge plus तारो केमदी कोन मूवमेंट हुए towards your electric field towards magnetic field you can mention similarly your proton also proton रो mass और charge तापर proton रो मूवमेंट केमदी कोन हुए towards electric field और magnetic field एनी दुईटा पॉइंट जे कोनोसी दुईटा पॉइंट लिखिले हे गला तापर 2 रो सी नंबर को क्वेश्चन को जिबा 2 रो सी नंबर क्वेश्चन रहिछि जे calculate the energy of k cell of a hydrogen atom k cell of a hydrogen atom रो एनर्जी यदि कैलकुलेट करबा एडा हबो -13.6 by 1 रो स्क्वायर so it is -13.6 ev so it should be -13.6 ev -13.6 ev आसीबो नेक्स्ट डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे एनोड रे रो प्रॉपर्टी जदि हम देखबा एनोड रे रो प्रॉपर्टी आ प्रोटॉन रो प्रॉपर्टी टिके डिफरेंस रहबो एनोड रे रो प्रॉपर्टी कोन इट पासेस अलोंग स्ट्रेट लाइन रे पास करियो बोली कहितिला ता सहित जेतोला में किछि पेडल व्हील रखतिले से ताकू रोटेट कर दोथिला इट रोटेट्स द पेडल व्हील तापर हमें कहि परिबा जे व्हेन वी प्लेस एनोड रे इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव पार्ट सो नेगेटिव पार्ट आड़ को डिफ्लेक्ट हो जाउतिला बोली हमें पढ़थिले नेगेटिव पार्ट आड़ को डिफ्लेक्ट हो जाउतिला ठीक अछि सो दिस प्रॉपर्टीज बेसिकली दुईटा प्रॉपर्टी लिखले 2 मार्क पाइ जिवो एनी 2 तापरे थिला एठी कोन एडा क्वेश्चन डा एनी 2 थिला एडा एक्चुअली एनी 3 हबो
whereas eta any one hobo. Sorry for this. So give an outline and observation of gold foil experiment. Gold foil experiment ro observation ଆଉ conclusion ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା मुक्ति प्रसाद कहले it depends upon the property of the glass present in the glass tube हबनी कि कैथोड रे हाँ हबो it can be okay. सब प्रॉपर्टी लिखि देइछो ओके राजलक्ष्मी बहुत बढ़िया तापर हमें जिबा जे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रो ऑब्जर्वेशन रे मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल भीतर देकी पळौथिला ठीक अछि नेक्स्ट किछिटा पास करूथिला पास करके डिफ्लेक्ट होथिला आउ 1 आउट ऑफ 20,000 रिफ्लेक्ट बैक होथिला एबला तीनटा कोन होथिला ऑब्जर्वेशन देखिया को मिलथिला गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रे वेरेस कंक्लूजन कोन थिला ना जो तुम्हारा पास हे गला माने एम्प्टी स्पेस थिला दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पुनी डिफ्लेक्ट हवा माने तार माने हमें कोन बुझबा डिफ्लेक्ट जेतेबेला होची ता माने हमें कहि परिबा जे एठी when it starts to deflect that means you can say that it must contain some heavier part ठीक अछि heavier part नहीं तो गोटे पॉजिटिव पार्ट रहिछि आउ 1 आउट ऑफ 20,000 रिफ्लेक्ट बैक सेठो हमें कंक्लूजन पाइथिले जे किछि गोटे हेवियर पार्ट रहिछि ठीक अछि so these three were the conclusion and observation तीनटा conclusion तीनटा observation minimum लिखिबा को पड़िबो otherwise you will lose mark. What were the merits and demerits of Thomson's atomic model? Thomson's atomic model ର merits थिला दीटा आउ demerit गोटे लिखिले यथेष्ट so merits दीटा demerit गोटे लिखिले तुमको 3 मार्क पाइबो merits दीटा लिखिबो आउ demerit गोटे merit कोन थिला ना merit थिला तुमरो जे समानकर कोन थिला ना in Thomson's atomic model an atom consists of equal number of proton and electron so it is neutral it is quite neutral आउ गोटे मेरिट थिला जे तुमरो it is arranged in a way that as plum pudding model भली लिखि दे परिबो ओके तोसिनी द्वारा तुम्हें एग्जाम दे देछ किंतु अपलोड करबा को भूली जाइछ तुम्हें से अनुसार तुम्हें कनेक्ट करिवो कहा को तुम मेंटन को विवेक सार को सहित ठीक अछि नेक्स्ट तुम्हारा जिबा आइसो इलेक्ट्रॉन आइसोटोप आइसोबार आइसो इलेक्ट्रॉन कथा जदि कहबा आइसो इलेक्ट्रॉन कोन आइसो इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन समान रहबो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइसोटोप माने नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहबो आइसोबार माने एटॉमिक मास सेम रहबो आ एग्जांपल तुम्हें देखि परिबो ठीक अछि तापर calculate the mass of photon of sodium light having wavelength 589.4 nanometer so 589.4 nanometer रहिछि तार हमको wavelength calculate सॉरी तार हमको मास बाहर करिवार अछि ठीक अछि मास केते पसरा आइछि अब हमें हमको एटे कोन कहछि लैम्डा दिया आइछि दैट इज 589.4 nanometer you know that lambda is equal to h by mv according to de Broglie wavelength equation ठीक अछि मोनासी तुमको सेम मार्क मिलिबो so lambda is equal to h by mv you can use this so accordingly you can get m is equal to h by lambda v m is equal to h by lambda v h माने हमरो जानते 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second divided by lambda ର value in terms of meter लिखिबा को पड़िबो in terms of meter convert कले 589.4 multiplied by 10 to the power minus 9 then 3 into 10 to the power 8 meter per second that is the velocity of light you have to use all this data ମୁଁ तापर कैलकुलेटर टा यूज कर देली किंतु तुम एग्जाम रे कैलकुलेटर में भी यूज न करि पारो
So it came out to be 0.00374 multiplied by 10 to the power minus 34 plus 9 plus 8. So 8 minus 9 is equal to minus 1. So it is 10 to the power minus 33. ताले एटा केते हिजबो ना पॉइंट से पड़ो पड़ले 1 2 3. So 3.74 into 10 to the power minus 36 kg. In terms of kg एटा आसीबो. ग्राम रे तुमे जदी कन्वर्ट करिवो कारण हमें सब SI यूनिट रे कन्वर्ट करछे 3.74 into 10 to the power ग्राम रे कन्वर्ट कले या को ग्राम रे कन्वर्ट कले 10 to the power minus 33 ग्राम होबो. ओके कारण हमें सब SI यूनिट रे नै छै तेनु एटा रो आंसर केजी एवं ग्राम रे आसीबो. ओके बहुत सुंदर एमएसपी पार्क ठीक ठाक उत्तर दैछंती. आई थिंक एबे आ प्रॉब्लम हो नथियो नेटवर्क इशू मझे टिके नेटवर्क इशू है 6टा बेले बोधे नेटवर्क इशू है. नेक्स्ट थिला तुम्हारा इन डिटेल्स डिस्कस द फोर क्वांटम नंबर्स. सो फोर चारटा क्वांटम नंबर पूरा डिटेल्स डिस्कस करिवो. एनएलएमएस कोन कोन पूरा डिटेल्स रे डिस्कस करिवो. आ बोर्स एटॉमिक मॉडल को डिटेल्स रे पोस्टुलेट्स को मिनिमम तार जो पांचटा पोस्टुलेट जोडा मु पढै छी सेटा डिस्कस करिवो. नो नीड टू डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स डिस्कस करिवा दरकार ने ओनली पोस्टुलेट्स. तो तुम्हें एइदर जे कोनोसी गोटे लिखिले तुमको 5 मार्क मिलिबो. दीटा लिखिवा दरकार नथिला. ठीक अछि कारण एटा 5 into 1 मार्क रहिछि. आउ 3 नंबर क्वेश्चन रे तीनटा लिखिवा को पड़िबो कारण एठे 3 3 की 9 मार्क रहिछि. ओके एमएसपी पार्क माने तुमे साई. आई थिंक समस्तंकर डाउट क्लियर हो जाइथिबो जे कार कोठी केमती कोन मार्क आस्थिबो तुमे माने अंदाज लगे देई पारथिबो. सो प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट स्टिल. 25 मार्क रे क्वेश्चन थिला 25 मार्क रो तुमरा आशा करछि मैक्सिमम पिला 25 स्कोर करथिबो. अच्छा को मानकर 25 रु 25 आसीबो ए एग्जाम रे को माने 25 रु 25 स्कोर करिवे बोली भाबुचन. देवस्मिता 25 रु 25. ओके देवस्मिता कहले अन्य माने के केते आनिबो बोली भाबुच. तोसिनी द्वारा मु तुमको केमती जानबी तुमे देवाशीष द्वारा बोली कि देवस्मिता बसाओ 25/25. मुक्ति प्रसाद 25. तपन बारी कहले 25. अन्य माने के किछि कहलेनी. रुद्र नारायण साहू कहले भी 25/25. ओके लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट. के भी 24 आनिबनी राइट. सो ओनली 100% नो for 90% or 80%, only 100%. Our target is 100%. I think maximum students might have scored 100%. If you have not, then kindly tell me. Okay, so let me drop the session here. Thank you for joining the session. Thank you all of you.